গাড়ি ওরম হচ্ছে ভাই আমাকে লিচ হ্যাঁ ওই সাদে মন সাজিমো ঠিক আছে হ্যাঁ সবাই কোন দেব मुर्शिदाबाद में एक बार फिर हंगामा, बसें फूंकी गई, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जी हां, वक्फ कानून के विरोध के दौरान एक बार फिर से मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज सूटी इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। शुक्रवार को धारा 163 की अनदेखी कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया, यहां तक कि रेलवे परिसेवा भी बाधित की गई। पुलिस द्वारा अवरोध हटाने पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान ईंट पत्थर के साथ बम भी फेंके गए। हमले में फरक्का के एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फरक्का अजीमगंज रूट पर ट्रेन सेवा भी बाधित रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। सरकारी व निजी बसों में आग लगा दी गई। आरोप है कि एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान 2 युवकों को गोली भी लगी। जंगीपुर महकमा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालात बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने बीएसएफ उतारने का फैसला लिया। इलाके में अब भी तनाव बरकरार है। बता दें, नए वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी। हिंसा के बाद ट्रेन सेवाएं भी ठप हो गई और रेल यात्रियों में दहशत है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सीएम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही हैं। Government is taking very stern action against the miscreants and will not allow disturbances to escalate. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that. तत्काल থেকে জঙ্গিপুর এরিয়া पर हमने डिस्टर्बेंस देखा गया। আমি আবার বলছি, গভর্নমেন্ট দিক থেকে ক্লিয়ার এটা আছে, কোনো রকম ভুল বরদাস্ত করা যাবে না। You are dealing with this situation very strongly and আমরা যেটা আছে আপনাদেরকে যেটা ফার্স্ট হিউম্যান কোনো ক্রিমিনাল সিচুয়েশন হলে কোনো সিচুয়েশন হলে এটাকে লোকরা ভেস্টেড ইন্টারেস্টরা এটা টার্ন করছে। ইট স্টার্টেড উইথ demonstration, then destruction of public property, and then it took communal angle. I am trying to appeal through your through you all. আমরা যেটা আছে কোন রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিক কে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে, মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে कंट्रोल করার চেষ্টা করে। বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম पर जाए যাওয়ার চেষ্টা করবে, we will deal it very very strong. It is our duty to protect the life and property of people. We will deal with it. যাদের এটা হয়েছে, government has already said that they will stand by the people যাদের ড্যামেজ হয়েছে, that will be taken care of. But at the moment rumors have to stop. People have to don't believe in rumors. We are taking help of একটা এর মধ্যে এটা হয়েছে কি এটা একটা ক্রেডিট হচ্ছে ও ক্রেডিট হচ্ছে। This time we are fighting a situation where all of us need to be together. We need to understand that there is a fight between good and bad people. যারা বদমাশি করছে, যারা কেউ হুলিগান করে, যারা miscreants আছে, mischievous people আছে, we will deal with them very very strongly. That is the end in all today.
there is a আপনারা জানেন একটা হনুমান জয়ন্তীও আছে, অনেক জায়গায় প্রসেশনও আছে, ওখানেও we have people. I will appeal to everyone, especially the all the good people and everyone যারা আছেন, যারা নর্মাল সিটিজেন আছেন, হিউমারে বিশ্বাস না করতে আমরা সব রকম চেষ্টা করি। We are with them. We will ensure that their life and property protected, and we take very, very strong action against the people who are trying to do it. Let us not try to play with emotions and fire. কিছু লোকরা even যেটা the impression has been given কি একটা যেটা this bill which has been passed ওর নিয়ে এটা হয়ে যাবে, ওটা হয়ে যাবে। People have to understand the reality, people have to understand things and then react. এটা করলে anyone who is taking a law in his hand, we will deal with them very, very strong. There is no way any kind of violence can be allowed. We are there, our officers, court, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again, rumors have to be rumors boundary. People have to stop. Since yesterday there were rumors, after Shokali there was an unfortunate incident of this thing, because of which it again went into spiral. But আমাদের যেটা আছে right now, the idea is to control it well and punish them. People have to take, মানে আমরা before like this, that is 163 now, that area where people are advised to stay in the police stations, phone numbers have been given, control room number have been given. If there is any problem, call them, tell them if there is an issue. They can, but people are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable. And that will be very, very, no one, irrespective of who he is or the miscreant, we will deal with them as strongly as possible. Our normal law and orders, other thing, people, we try to persuade them, we try to tell them, we discuss it, but it should not be seen as a that in case if people take law into their hands and do violence and this kind of thing, if they are indulging, we will deal it as strongly as possible. I will be ADG Law and Order will give you all the details of the incident which you must be asking, thinking about. They'll give again আপনাদেরকেও যেটা বলছি, this is the time of not scoring points. This is the time of not the lives of people are at property at stake. And as I said, the government has said they will stand by that where property damage হয়েছে, এটা হয়েছে, there is a আইন আছে এবং the community থেকে পূরণ করা যাবে. They will take every action. People should not be emotional. Government has said they will stand and no any kind of violence is acceptable. Whatever. That is what is the thing. And you please don't সকালেও যেটা হয়েছিল কিনা একটা লোক গুলিতে মারা গেল, তারপরে জানা গেল না পাতে গুলি লেগেছে, যেটা এটা হয়েছে। This thing has to stop. And এর জন্যই সব লোক বলে দিচ্ছে, লোকরা বাইরে চলে আসে। From sitting from Calcutta, sitting from somewhere else, it is easy to pontificate. Our people are there, they are trying their best. I will request your cooperation. Let's stop. Their incident we will definitely. But if we keep attacking rumors, to face the energy of the time and energy of the officers who are on the ground. Please give us. I'll need we will need your cooperation. Again, I tell you, we will take strongest possible action. We are not enemies. We are taking it, and whatever is the thing, if you have a quick one or two questions, I can take them. We have done what I said, police users, minimum force, whatever is required has been done. If it is required, whatever is required, we will do, and we have done. In a filing which has taken place,
people are injured, but nobody is died. It is not a question, again I am saying, it is not, whatever is required will be done. But dealing with rumors cannot be just spread. এখানে এটা হচ্ছে, we need to be together at this time. And we don't need to see it through prisms. যে এটা আমি এখানে belong করি তাহলে আমি এই হিসাবে বলবো, আমি এখানে করি তো এভাবে বলবো। আমাদেরকে যেটা আমরা বলি, আমরা যেটা দরকার আছে we will do. There is no other thing. The violence cannot be allowed, but it doesn't mean that we are dealing with enemies. The police, যেটা বলা হয়, police is public, public is police. আমরা কিন্তু এর মানে এটা নিয়ে যারা miscreant আছে, they are not included in that. We will take, I told you, strongest possible action we will take. 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.